I am Vakas Nasir, and I welcome you to Jolly Talk Show. Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. She's a journalist, she's an activist, she's an artist, she's a filmmaker, she's an editor, she's also an educator, and recently she's teaching in a university in America. But above all, she's a woman with progressive thoughts. That is why, along with other peacemakers in South Asia, she has taken an initiative by the name of SAPAN, South Asia Peace Action Network. SAPAN is basically coalition of different individuals and representatives from different organizations who are working towards the same initiative, who are working towards creating peace among South Asia. This interview will give you an insight that how Bina brought all these people together and what is that thing that keeps her bright in the darkest of times. Wow. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Good, thanks. How are you? Walaikum salam. And firstly, welcome to Jolly Talk Show and thank you for agreeing to appear on this show because I was, like skeptic that you might decline the invite. No, I went and saw जो आपने किया था ये अंग्रेजी में कि उर्दू में? दोनों में, it's like you can Okay. talk in any language you want, and it's for Pakistani Okay, awam, okay. so you can go with Punjabi as well. Okay, चंगा. नहीं तो जब आपने मुझे ईमेल किया और मैंने आपका वो YouTube जाके देखा and I saw the work you're doing, I think it's wonderful. I like to encourage young people who are coming into this field. I find it very inspiring. और आप लोग ही हैं हमारा मुस्तकबिल तो Thank you you know so much, man. I'm It means a very lot. happy to get your message and to So, ma'am, I started this show in the pandemic because I wanted to know that what people are going through, because this is the situation which was new for everyone. तो मुझे आपसे ये पूछना है कि when this pandemic start, so what were your thoughts and feelings? What kind of emotional impact did this pandemic have on you? That's a really good question. जब ये शुरू हुआ ना तो मैं एक्चुअली पाकिस्तान में थी और खबरें आने शुरू हुई थी कि ये शुरू हो रहा है इस तरह का कुछ तो किसी के वहमो गुमा में नहीं था कि ये इस तरह की चीज हो जाएगी और इस तरह की वबा से हमें सामना करना पड़ेगा. खबरें आने शुरू हुई थी कुछ थोड़ा सा पता लगने एक तशवीश होने लगी थी कि ये क्या हो रहा है. दस परेशानी थी. But I don't think anybody could have imagined. Sorry, headphone गिर रहा है. I don't think anybody could have imagined कि इसका आउटकम क्या होगा, ये कितना लंबा चलेगा और कितनी जाने लेगा. अभी जैसे मैं आपको बता रही थी just before we started, कल रात मतलब पाकिस्तान की सुबह मुझे पता लगा कि हमारे एक बहुत पुराने साथी जो हैं, बहुत पुराने दोस्त who I had known since 1993, कामरान आरिफ, ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम लोग इकट्ठे थे. पहले जो काउंसिल में हम लोग दोनों इकट्ठे हुए थे, हम लोग दोनों we were the same age and I think we were the youngest members of the Human Rights Council. आसमा जहांगीर ने मुझे खींच लिया था. I think उन्होंने कामरान को भी खींच लिया था. He was a lawyer and then he was part of हमारा जो पाकिस्तान इंडिया पीस forum for peace and democracy, उसके भी साथ थे. And he was part of our movement for a South Asia without borders, a South Asia, he had that vision also. तो एक तो ये अभी just recently ये हुआ. फिर I've lost 2 cousins, a second cousin in London, a first cousin in Karachi. उसके अलावा कितने हमारे जानने वाले हैं जिनके किसी का भाई गया है, किसी का शौहर गया है, किसी का it's just really devastating जो इसका जो पूरा हुआ है. Yeah, so I don't think anybody जब ये शुरू हुआ, I don't think anybody could have guessed. मगर जैसे जैसे पता लगने लगा कि कितना ज्यादा ये फ्लू से फर्क इस तरह से है कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है. और दूसरा ये कि ये आपके इमीडिएटली जाहिर नहीं करता है कि ये आपको इन्फेक्शन हुआ है. बिकॉज अगर हम लोग मिलें तो you could be infected or I could be infected and we could be asymptomatic और हमें पता भी नहीं you wouldn't even know. You wouldn't even know. That's what asymptomatic means कि आपको कोई symptom. But then
आप वो आप इन्फेक्शन किसी और को पास कर सकते हैं, वो किसी और को पास कर सकता है और क्या कर सकती है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है ना ये इसका फैलाव है, नंबर एक। नंबर दो, सिम्टम्स, कितने लोग हैं हमारे जो जो जिन लोगों को मैं जिक्र अभी किया, दे वर इन देयर लेट 50s अर्ली 60s, हेल्थी पीपल। Yeah. एंड हमारे कॉलीग्स हैं जियो टीवी में, जर्नलिस्ट कितने हैं जो कि गए हैं। मगर लगता है कि ठीक होने लगे हैं, बज़ाहिर लगता है कि अब ठीक हो रहे हैं, और देन एकदम से ये जो है, क्योंकि ये जो वायरस है ये आपके ऑर्गन्स को अटैक करता है। It does. तो जब ये पता लगने लगा कि ये इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है और इसका कितना खतरा है, तो देन आई थिंक आई एंड मेनी अदर पीपल वी वर वेरी क्लियर कि ये घर तक भी पहुंचेगा और हमें भी अफेक्ट करेगा। तो वी न्यू कि ये होने वाला है। And you had a whole session about that with Dr. Saima. I saw that interview on YouTube. Oh my gosh, you did? Wow. Yes, because she is a doctor, Dr. Saima Firdaus. She's a doctor, and उस वक्त ये जिस हॉस्पिटल में कर रही थी, तो और उसको बिकॉज उसकी फैमिली सारी पिंडी इस्लामाबाद एरिया में है, सो यू नो इवन पीपल हु आर अब्रॉड, लाइक मैं इस वक्त बॉस्टन में हूँ, लेकिन कितने हमारे दोस्त जानने वाले फैमिलीज उधर। तो we just felt this urgency. I don't remember कि किस महीने में हमने किया था. I think might have been March, April. I don't remember. But it was early on. I don't remember कि हमने कब किया था. But if you looked it up, then you must have seen it. It was before us, I guess. But yeah, like there was a It was lockdown. before. It was before It was us. before. It was before we got locked down. उससे पहले हुआ था मेरे ख्याल से. Oh yes, oh yes. It was before any lockdowns Yeah. in the area there, because यहाँ पे अमेरिका में तो ये पता लगने लगा था कि क्या हो रहा है, और यहाँ पे जो सदर थे, सदर मुमलकत थे उस वक्त, Yeah. thank God he is gone, वो तो इसको टोटली नॉन सीरियसली ले रहे थे, एंड वो बिल्कुल कि ये तो कुछ है ही नहीं। और हमारे उसके एकोज हम अपने पाकिस्तान में भी लीडरान से सुनते आ रहे हैं, इंडिया में भी लीडरान से सुनते We आ रहे have हैं। a lot of Donald Trumps in Pakistan as well. Yes, yes, you do, we do, yes, and all over the world इस तरह के लोग हर जगह हैं जो कि अपनी उसके लिए कि अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको कहेंगे कि नहीं है, मगर उसको भी हुआ, and he and his wife also got it। मगर आप ये देखें, जो अमीर लोग होते हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, उनको तो फौरन इलाज मिल जाता है ना। बिल्कुल. उनको तो कोई there was no fear he was going to die। बोरिस जॉनसन को हुआ सारा, मतलब कि अभी आपके इमरान खान और फर्स्ट लेडी को हुआ हुआ है, Yeah. आपके सदर को हुआ हुआ है, इनको तो कोई खतरा नहीं है ना। ये तो नहीं खुदा ना खास्ता इनके लिए, बिकॉज इनके लिए सब कुछ मौजूद है। लेकिन जो लोग हैं जिनके, एंड इट इज नॉट जस्ट गरीब अवाम, लोग कहते हैं पाकिस्तान में जी ये तो कुछ, ये तो अमीरों, ये तो मिडिल क्लास की बीमारी है, गरीबों को नहीं हो रहा है। maybe, but there are many factors, there could be many factors, like आपके घर जिस तरह से वेंटिलेटेड हैं, आप कितनी ज्यादा बाहर फिजा में आप होते हैं, कितने आप बंद कमरों में, कितनी आपकी अपनी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी है, ये सब तो फैक्टर्स हैं। Yeah, it all मगर matters. it all matters, मगर it doesn't mean कि अगर सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को हो रहा है, which is also not true, because अगर आप जाएं, आप लोगों से बात करें हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान के, इतने हमारे दोस्त हैं जो कि जिना हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, जो कि अवाम के हॉस्पिटल है, दीज आर नॉट हॉस्पिटल जहाँ पे रईस लोग जाते हैं। Yeah. वहां पे कितनी डेथ्स हुई हैं, मगर उनका पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये गुमनाम लोग हैं। Who cares? You'll hear कि कामरान आरिफ died of COVID, but you won't hear some गुमनाम मेहनतकश, some middle class, some tutoring कोई कर रहा है, कोई कुछ, मतलब कि जो जिन लोगों के नाम ही नहीं लोगों को पता, तो उनके नाम क्या अखबार में आएंगे। मैंने तो Listening to बल्कि ये all of suggest these things that you have just shared, and keeping in जी mind कि आप एक activist and you care about, like, you advocate human rights. And when I see violations like these, and when I see incidents like these, so I can understand कि आपके ऊपर actually क्या गुजरी होगी. And like when I heard that people very close to you have gone, I like firstly condolences from my side, and it must have been really hard for you, and I'm sorry to hear that. thank you, it is very hard, it is very hard, because this is a preventable thing, this is not a cause। हमारे एक दोस्त हैं कराची में, असलम ख्वाजा, who is also an activist, तो मैं कह रही थी कि कैसे तुम मैनेज कर रहे हो, अकेले रहते हो, ये कैसे कर,
So he said something very wise. He said कि मैं पूरा एहतियात कर रहा हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ कुछ खाना पीना लेने, जो कुछ करना है तो मैं ऐसे निकलता हूँ कि मैं लोगों के भीड़ भाड़ में ना जाऊं। क्या जरूरत है आपको कि आप किसी क्राउडेड दुकान में जाए? आप ऐसे वक्त में जाए जब लोग कम हो, आप एहतियात करें। इसे देखो दोस्त, मैं कॉज के लिए मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये कोरोना की वजह से मरने को तैयार नहीं। It's a And very this is beautiful thing. It's a very beautiful thing yeah, you said. या कि हम लोग हम किसी कॉज के लिए आप हमें मार दें, आप हमें कुछ कर दें, लेकिन इस वबा से मरना बेतुका मतलब कि Why even kill you of a cause? Because like I was going to come towards that. क्योंकि अभी आपने सके बताया कि like your friend Kamran died and you guys started a thing. Like you guys were doing something together which was like for the betterment of peace between two countries, India and Pakistan. So I actually want to know that कि आजकल because थोड़े दिनों पहले you firstly congratulations on the launch of South Asian Peace पीस एक्शन नेटवर्क। network and a little bird sent me this press report, so I had it printed, and like it was quite insightful when I read the comments and when I read the views of the people. But I was shocked the other day when that decision of the import was deferred. So like there's a sentence, there's a line which actually highlights the whole thing behind this South Asia Peace Action Network. That newly launched South Asia Peace Action Network sees an Umeed ki Kiran. After this decision is deferred, do you still see that Umeed ki Kiran now? या वकास, ये जो फिक्रा है ना, ये कहा था डॉक्टर सैयदा हमीद ने, who's in Delhi, Yeah. and she is a niece of the late Dr. Mubashir Hassan, जो कि हमारे mentor भी थे, और he was one of the Yes. people Who started behind all this, this? one of the people who started all this, and from him for the first time I heard the vision for a united South Asia, not कि आप borders खत्म कर दें, मगर like the EU कि आप soft borders रखें, लोग मिल सकें, लोग काम कर सकें, टूरिज्म, ट्रैवल, खाना पीना। एक जमाना था जब लोग लाहौर से अमृतसर जाते थे, फिल्म देखकर आ जाते थे। Yes. सोचें आप, एक जमाना था, आई रिमेम्बर सम इयर्स अगो कराची में एक ओल्ड कार्स का शो था, और उसमें जो लोग वो कर रहे थे, दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल, उन्होंने कहा कि हमारा ख्वाब है कि हम अपनी विंटेज कार्स की रैली इंडिया, हम सरहद पार ले जाएं और वहां पे हम पूरी विंटेज कार्स की रैली करें। यू नो, कन्याकुमारी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने साइकिल रैली फॉर पीस किया। उन्होंने कहा कि हम कन्याकुमारी, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया से हम पेशावर तक जाएंगे, एंड दे केम अप टू अमृतसर, बट ऑफ कोर्स उनको वीजे नहीं मिले। सो द थिंग इज के जिन लोगों का काम है ये सब रोकना, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसको बहुत थ्रेटन होते हैं, बिकॉज जाहिर है अगर पीस हो, अगर लड़ाई की जरूरत नहीं हो, तो फिर आपका धंधा ही खत्म हो जाता है ना। तो आपकी दुकान जिस चीज से चलती है वही खत्म हो जाती है। जो लोग नफरत की बिना पर अपने आप को आगे लाते हैं, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एज मिलिट्री आर्मी, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जो एक हेट का कारोबार है, जिन लोगों ने हमको भी कई दफा अटैक किया है, तो Exactly. That's what I was talking ये about. खत्म हो जाता है ना। सो बेसिकली उनका काम वो तो करेंगे अपना, जो उन्होंने करना है, रोकेंगे जो कुछ भी है, और हमें अपना काम करना है। तो उसमें होप नो होप की तो कोई बात ही नहीं ना। वी हैव टू कीप डूइंग व्हाट वी हैव टू डू। बट आई विल से वन थिंग, कल मेरी अमर्त्य सेन से बात हुई, द इकोनॉमिस्ट हु इज हियर आल्सो, एंड I called him about this thing, and this is not something to be that he said to me to be quoted. It was just a courtesy call कि आप कैसे हैं, to let him know कि हमने ये किया है। And I said कि the पाकिस्तान ने ये decision लेकर revoke किया, Yeah. so because of Kashmir, right? And Amartya Sen said कि yes, that's an entirely reasonable position, because he is one of those people in India, and there are many people in India, हमारे बहुत से दोस्त हैं वहां पे जो कि कश्मीरियों के हक के लिए लड़ रहे हैं, जो कि ना कश्मीरी हैं ना मुसलमान हैं, लेकिन आप ये नैरेटिव पाकिस्तान में नहीं सुनेंगे। ये एक नुआंस चीज है, एक गहराई की चीज है, जो कि पाकिस्तान में आपको आप पाकिस्तान में तो वो ब्लैंकेट की इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया। Exactly. आप ये देखिए, It's a blame game. इंडिया में इस वक्त पीपल लाइक डॉक्टर सैयदा हमीद, पीपल जो कि हमारे साथ साउथ एशिया पीस नेटवर्क, एंड दे आर नॉट, साउथ एशिया पीस नेटवर्क इज नॉट एन एनजीओ, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इट इज जस्ट अ कोलिशन,
bringing It is a because उनको coalition. इतने I सारे was surprised to see a yeah lot of people from different walks of life. Like I yes saw Shima Karmani, and there was an artist, Salima Hashmi. So yes when I saw all those people, I was like, okay, like this is something big, and they are doing. but these people Wakas, have been part of this movement for peace for a very long time, since a very long. So the movement for peace was actually in a way begun by women, by artists, by environmentalists, because 80s mein what happened was कि हमारे, as you two obviously young, but we had this because you're intelligent. I can see कि you're an intelligent young man and you do Thank your you. research, and I'm very impressed by that, and I really applaud you for that. So of Thank course you. कि we had a military dictator, Yeah, and we had the 65 war, and we had the military dictatorship, and there was a lot of India Pakistan के दरमियान कोई मतलब वो नहीं था, लेकिन even that military dictator did what is called cricket diplomacy कि कोई मैच जब था तो वो पहुंच गए वहां पे, क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया का मैच था, इंडिया में पहुंच. So ये जो कोशिशें हैं, and then Mushahid Hussain was editor of the Muslim in the 1980s. He organized a thing of Indian intellectuals to come to Pakistan and visit कि हम भी आप जैसे लोग हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं, हमसे बात तो करें. exactly. हम जो फ्रंटियर पोस्ट में थी तो खालिद अहमद एडिटर थे, जफर समदानी साहब एडिटर थे, and they organized two such trips, and this was in the early 90s, frontier post वाला जब था. Then in 1993, then 80s में, in the meantime जब SAARC शुरू हुआ, Yeah. so a lot of meetings started happening in countries that were granting visas, like Nepal, like Kathmandu, like Sri Lanka, like Bangladesh. तो वहां पे लोगों की जब मुलाकातें हुई, environmentalists, वाटर के हवाले से बात करने के लिए, women, artists, तो लोगों को बहुत चीजें कॉमन मिली, जो हमारे कॉमन इश्यूज हैं. पॉवर्टी है, illiteracy है, lack of education, child mortality है, maternal mortality है, domestic violence है, so called honor killings हैं. ये मुश्तरका हमारे इश्यूज हैं, और इन इश्यूज को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, बिकॉज इकोनॉमिक वेलबीइंग जब होगी तो फिर लोग जो हैं वो आपस में, मतलब कि आपकी सबकी खुशहाली होगी, सबकी मतलब के वो होगी ना, सबकी भलाई होगी. Exactly. So yeah, so this has been going on for a very long time, और जो लोग हैं Has been going on for a very long time because yeah you guys are taking forward the legacy of the people like Asma Jahangir, and like you mentioned as yes Mubashir Hassan, Kuldeep Nair, Nikhil Chakravarti. So they did something and it has an impact, and we can see that in the form of you. So firstly, I would and not just me, no, not just me. I just want to say that this is you not are one me. of those people. I mean to say, you're one of those. I'm just one person in a very, very large number of people. I know. So I think we forget because we tend to think कि जो dominant narrative है हम उसको ही लेकर चलने लग जाते हैं, because news media का काम है news, ठीक है, and war and hostility makes news, peace does not make news. Doesn't. Conflict reporting. Yes, and so that is a big thing. जब ये अफगान वॉर हो रही थी तो बहुत सारे many journalists came up, बहुत सारों ने और अच्छा हुआ उनके लिए बहुत, for the first time they managed to make some money, and for the first time अपने छोटे मोटे घर लोगों ने बनाए because they were getting work. Journalists are not the most highly paid people. Only very few top anchors are maybe making a lot of money. Most journalists are struggling. यहाँ पे मैं journalism पढ़ाती हूँ अमेरिका में, जो बच्चे आते हैं इसमें, I'm teaching these young people. I am so impressed by their passion and their commitment. The people I see in Pakistan, you're not getting paid for this. You're doing it's a journalistic thing you are doing. Yeah. But people who are doing this, I see this passion in the youth, and it has been fueled by social media, because social media से हर एक को एक platform मिल गया कि आप अपनी बात आगे करें. Exactly. और मैं इसमें एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ, which a student of mine actually said in a class 2-3 years ago.
because I was talking to them about ethics and responsibility social media के हवाले से. Social media ने लोगों को एक तरह का एक पर्दा दे दिया है कि जो जहन में आए आप उसको उगल दें, और उसकी वजह से डिविजन्स बढ़ गए हैं, बदतमीजियां बढ़ गई हैं, लोगों को एक तरह से बेसाख्ता जो मर्जी आए दिल में कह देते हैं, जो आपसे फेस टू फेस नहीं कहेंगे वो जो मर्जी आए फेसबुक पे ट्विटर पे जो भी Yeah, it's ऐसी something बातें very करेंगे. psychologically disturbing. Like whatever they want to say, they Very, say. very disturbing. Yeah, So my appeal to young people, and this is I tell my students, and you know many of them have been also reactive. So my appeal to especially to young people who are using social media is कि आप ये देखें इसको as it's a form of journalism, not the part where you're saying, oh, I had a party with my friends, or you know, like I'm yeah, having coffee with fala, not that. मगर अगर आप information share कर रहे हैं, अगर आप ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, if you are trying to analyze socio-political economic issues and you are trying to make a positive difference, चाहे वो difference आप right wing की तरफ से, you might be somebody who has conservative thoughts, you yeah. might be somebody who has very progressive thoughts. I am not talking about ideology. आपकी जो ख्यालात हैं हो सकता है मुझे उनसे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ हो. Exactly. But my appeal to anybody who is engaged in this is, well, as my student said, that everybody should think like a journalist. और journalist के basic usuls दो तीन जो हैं, one of them is कि आप कोई खबर जब फैलाएं तो it has to be factually based. आप 2 या 3 source confirmation जो है आप उसको इस्तेमाल करें. आपने मुझे बताया कि फलां का इंतकाल हो गया और मैं उसको लेकर डाल दूं सोशल मीडिया पे. And by the way, I have myself been guilty of this. Okay? Yeah, they As don't somebody verify has it. been very critically ill, so I have done this myself. I will confess. एक दो दफा मुझसे हुआ है where somebody was critically ill और किसी ने मुझे मैसेज किया कि ये हुआ है और मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी. But then I deleted it immediately because then I checked with somebody and that person was still alive. They died a couple of days later. But I'm saying 2-3 source confirmation is very important for sharing information. Number 1. Number 2 is कि आप जज्बात में आके आप लोगों से बहस ना करें, खुदारा लोगों से बहस ना करें. Somebody has given, किसी ने आपको गाली गलौज दी है, उसका मसला है. You don't have to reply to it. They start गाली a whole गलौज करें. conversation. They start a whole conversation in the comments, and that conversation turns But- into a ramble. But Waqas, conversation takes 2 ना. अगर आप उसका जवाब ही नहीं देंगे, उसका नोटिस ही नहीं लेंगे, तो फिर कन्वर्सेशन तो नहीं ना हुआ. Exactly. उसको Just बकने दें. simply ignore. उसको बकने दें. Exactly. Right? Ignore it. आप अपने, what happens is कि हमारा ईगो जो है ना वो भड़क जाता है. ईगो भड़क जाता है और हम ईगो की वजह से हम फिर वो उसने ये कहा तो मैं उसको ये कहूंगा, उसने, and The point is that फिर difference नहीं रहता ना, like you are same as him, और जो आपका अपना point भी होता है ना, which is actually true and which is actually factual, which actually has a lot of logic behind it. जब आप इतना बहस करते हो एक इंसान के साथ who doesn't have any grounds, आपका point खुद invalidate हो जाता है automatically. yes. So there is something that the late Iqbal Ahmed talked about. And उसकी Dr. Iqbal Ahmed की मतलब जो talk है उनकी जो, and I will suggest it to you and all your viewers, it's called Terrorism, Theirs and Ours. He gave a talk at the University of Boulder in Colorado in 1999, before 9/11, but it was a very prescient talk. Okay. The late Iqbal Ahmed, who is also one of the founders of Pakistan India Peace Forum and all that, he said something very important. He said कि आप जब किसी इस तरह की मुहिम में engaged हैं, so it is very important for you to have the moral high ground. अगर आप moral high ground lose कर देते हैं, तो फिर आप अपनी credibility lose कर देते हैं. So आप issues पर बात करें, आप personalities पर और individuals पर बात मत करें. Exactly. It is about issues. Yeah. That's good. As we have very few minutes left, I would say, so there are 2 important questions which I have to ask you now. The first is actually related to, you can say, what is going on in like all over the world. And recently in America, we have seen it. Like, if not experienced, you must have observed racism in different forms, right? So, like I'm talking about, like it started with, you know, like Islamophobia, and then it was Black Lives Matter, and now like we just read about
Asian hate, and like it's making headlines all over the social media. So I actually want to say that the system that we are living in, it needs to be reconstructed. But do you see that happening? Like, is it being reconstructing? Like, we know that you are living in America and it's a very developed country, but we know that what's going on there. Okay? So as a society, as a global society, you can say we need to be reconstructed. So do you think that we are reconstructing? Do you think that we are on that path? Reconstructing or evolving, you can say. Evolving, you can say. Yeah. So I just want to bring this thing, this Asian hate thing, into context. And this is another thing I tell my students. There's three things I tell them. Yeah. One is process, context, and long view. Yeah. मतलब आप सिर्फ खबर को नहीं देखें, हेडलाइन वाली चीज को नहीं देखें, आप देखें कि उसके पीछे क्या है. ठीक है? Sorry to interrupt, but there was one thing I actually read because I was doing some research, and I actually read that Asian hate started with when women were, like trafficked to US for the sex purposes, and that's why it all started. So like you can build on that. I was just think. Yeah, no, that's of course that is but that is again. You have to look as context, and then the third thing is long view. Okay, दूरंदेशी से आप देखेंगे क्या है overall. So these hate crimes are not new. Right now, one person went and did this to some targeted Asian women. ठीक है ना? But Asians, this is about racism. This is about the West doing this kind of thing. आप कोरियन वॉर देख लें, वियतनाम वॉर देख लें, वहां पे उन्होंने औरतों के साथ क्या किया. Because when you or China Japan का वो देख लें कि what was done, they were in all these instances, and not just that, आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश देख लें. Exactly. आप पार्टीशन पे देख लें कि किस तरह से औरतों के साथ जो सलूक हुआ. So this goes back to a very old thing. अगर आप थोड़ा सा इसमें और गहराई में जाएं, देखें, पढ़ें. So women are seen often as properties, and they are seen as fair game in situations of conflict. That's one thing. The second thing is the issue of othering. कि आप किसी दूसरे को दूसरा देखते हैं, आप उसको full तरह से इंसान नहीं देखते हैं. That is something else. They are the other. The process of othering. They are them and we are us. Yes, them and us. अच्छा. जब आप them and us करने लग जाते हैं, तो फिर आप इंसानियत के दायरे में से निकल के और आप जानवर से भी बदतर हो जाते हैं, बिकॉज जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं. ठीक है ना? सो ये इस तरह की चीज अदरिंग जो है, इट इज नॉट जस्ट एशियन अमेरिकन. आप पाकिस्तान में ये फिरका वाराना तौर पे आप देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या होता है, क्या हुआ है. Globally, it's a pandemic. It is a pandemic that we have to, come up like. It is, and it is something that is age old. It has to do with insani fitrat, the tribalism that we have as in our DNA. कि हम ऐसे हैं और दूसरे वैसे हैं, हम अच्छे हैं और दूसरे बुरे, बिकॉज हमारे डीएनए में ये. मगर हमारे डीएनए में एक और भी खुसूसियत है जो कि जानवरों में नहीं है, और वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. एक्चुअली जानवरों में काइंडनेस तो बहुत है, दे डू लुक आफ्टर ईच अदर आल्सो, बट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ थिंग्स, other things that distinguish us from animals, the nuanced ways that we can do things. So ये लड़ाई जो है ना, जो ये एक महाभारत है, जो महाभारत का जो पैराबल है, ये एक पैराबल है. लेकिन जब आप जो एक्चुअल जंग है वो हम अपने अंदर लड़ रहे होते हैं. हाउ डू वी बिकम अ बेटर पर्सन? हम अपने अंदर का जो जानवर है, जो कि जानवर नहीं, आई डोंट वांट टू इंसल्ट जानवर, हमारे अंदर का जो शैतान है, that is very intense. या हमारे अंदर का जो आपकी ये लड़ाई जो है आपके अंदर की जो है ना, it is that against that good angel and the bad
and the devil. It is against that. आप वो लड़ाई आपके अंदर की जो लड़ाई है ना, उसकी अक्कासी आप सोसाइटी में कर रहे होते हैं. Fighting में कर रहे And हो. people who don't think like that, who just see the surface and who just react, who are reactive, they tend to go and do these kind of violent things. It is somebody who is, sorry, just want to just quickly, there's Yeah, somebody that's fine. That's who is fine. capable of violent, somebody who's capable of abuses and violent behavior on social media will also be capable, can also lose it in real life, in This person. is the thing that you have said. Like I was thinking of it, and I just thought like maybe this is something that I have in my mind, or शायद कोई इस तरह से दूसरा नहीं सोचता है. But the moment you said it, I was like, okay, she's saying what I'm thinking right now. Good. And great minds think alike. Thank you so much. Thank you. I just forgot what I was about to say, but that's fine. So, oh yes, I was going to say that I was listening to your interview, and in that interview, you actually said that tolerance, Joe, it's not a good word. You should be accepting. You should not be like tolerating people. Because when you tolerate people, you just think, अच्छा यार वो तो बहुत ही नीच इंसान है. But when you accept that person, you accept that person, and you are like, okay, he is like us. He commits mistakes, and he has different views, but still he's a human. So I guess that sums it up pretty well. So, ma'am, the Yeah. last question which I want to ask you, and that I ask, and I ask that question to everyone, is that what is that thing that keeps you bright in the darkest of times? I think it is that. I think it is the realization. I think it is the realization that just like good and evil, darkness and light also coexist. Yeah. जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी भी होगी. अगर रोशनी है तो अंधेरा भी होगा. बिल्कुल. और हमें, and अरुंधति रॉय ने ये बहुत खूबसूरती से कहा था in her pandemic as a portal वाला talk, where she said कि खुशी जो है वो हमारा हक नहीं है. It is not something we are entitled to. We are not entitled to be happy all the time. Yes, we are not. और खुशी के साथ साथ गम भी हो सकता है, और गम के साथ साथ खुशी भी हो सकती है. Like जैसे कोई मैयत जब होता है, the most, The most sad part. grief that you feel, the most sad that you feel is when somebody that you love dies. But while you are feeling sad, you can also be feeling happy. You can also, आप देखें जब हम लोग इकट्ठे होते हैं for मैयतों पे, या तो लोग अफसरदा भी होते हैं, मगर कोई बात याद करता है तो लोग हंसते भी हैं. और कोई ये नहीं कहता हंसो मत, ये हंसने का वक्त नहीं है, या मुस्कुराओ मत. मतलब हो सकता है ऐसे लोग कहते हो, मगर I have not come across that, because I have come across that. You have. So then those people are very, they need to think about it a little bit. और मैं, sorry, एक और चीज मैं कहना चाह रही हूँ, which a young lawyer in Chandigarh, when he came here to Boston, he said this to me, and that opened my eyes to something that I had not thought of before. ये कोई मेरे ख्याल है 8-10 साल पहले की बात है, which has made me see things differently. उस वक्त पाकिस्तान में तालिबान का बहुत जोर था, और तालिबान जो है वो बहुत ज्यादा वो कर रहे थे violence. So he said to me, and this is a young Hindu lawyer from Chandigarh, and he said to me कि वो भी इंसान हैं और वो भी victims हैं. I said, what do you mean they are victims? वो तो You must have कर been रहे हैं shocked. ये. I was very shocked. I said, वो तो victims क्या मतलब? What do you mean? Yes, okay, इंसान हैं, मगर वो victims कहाँ के हुए? वो तो ये कर रहे हैं. And he said कि नहीं, मगर आप ये देखें ना, उनको भी किसी ने brain wash किया है, उनको भी किसी ने ये एक उनकी फुल ह्यूमैनिटी का पोटेंशियल जीने नहीं दिया. बच्चों को मतलब के ब्रेन वॉश करके उनकी इंसानियत को खत्म किया गया है. तो एंड उनके जो फैमिलीज हैं, दे बिकम विक्टिम्स, दे लूजिंग पीपल. So that really made me take a step back, and I think it is very difficult to and that goes for all these extremists. I think again you take out the हरकत, इंसान ने जो एक्शन किया है उसको आप उसकी इंसानियत से अलग देखें कि उसका जो एक्शन है वो गलत है, और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और उसका मतलब he has to be, each person has to be responsible for their actions. Exactly. Like there are people who have, like, not like there was a young girl who kept refusing her family's thing to put on a suicide belt and go into do this thing. उसकी मतलब एक बहन को पहले भेज दिया था. मतलब कि एक ड्रोन ने उसके पूरे घर को तबाह कर दिया. वो बच गई, बच्ची भागी. This was a report I read some time back. मगर
there are people who don't do that also, but बच्चों के साथ तो then you can't. Anyway, I'm sorry, बहुत वक्त हो गया है. Thank you so much. Well, that's fine, I ma'am. hope I hope I answered your questions. You answered all the questions, and I'm sad that we don't have that much time, because you have your classes and you have your own life, and this is a Zoom meeting, and Zoom meeting only has 45 minutes. So, firstly, thank you so much, ma'am, for being on this show, and it was truly an honor to have you and to have the insight जो आपने सारी दी है, and all those things that you said, because when it comes to these things, the activism and to advocate the people who cannot speak for themselves, I think you are doing something which needs a lot of heart, and we thank you for that. Thank you and a lot of people who are doing this, and trust Thank me, you. that was an honor to have you on this show. Thank you, and I'm honored to be on your show, and thank you for doing what you're doing, because हम सब एक साथ, we are all part of the same thing. Everything adds up, so what you're doing is so important. Thank Thank you so much, ma'am. Bye. Allah Hafiz. Lollipop, lollipop.